Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon everyone. I'm good. Build your dream. Good afternoon Pragya. How are you all? Sir, आज question asla constitutional remedies in which article? Okay. को question. Prelims ना mains रो question करदलो. Prelims रो करतो बोधे. ओके तो हमें लास्ट बहुत दिन ही गला हमें क्लास ये करियार जो प्रिलिम्स रे आसला. ओके यूट्यूब को क्या हो गया, सिर्फ चैनल का नाम शो कर रहा है, पता नहीं. सौम्य सर अच्छा. अच्छा आर आई ओमेन एग्जाम पड़ता. ओके अच्छा जो मैंने आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कर आंसर ठीक हम कौन. अच्छा तो आम फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते बट जी प्रिलिम्स तापर आसीगला तापर अन्य जिनस थिला. गुड जय हिंद मिताली. गुड आफ्टरनून. बहुत जिनस थिला तो आम क्लास बहुत दिन है आम बंद करके रखी थे. तो पुणी थे आम यहाँ को रिज्यूम करवा. ओके समस्त ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छे. कन्फर्म कर दिखाते थे ऑडियो वीडियो समस्त क्लियर अच्छे ना नहीं. सर आज न्यूज़ पेपर एनालिसिस क्लास है नहीं. अच्छा सौम्य सर मत क्लास देते यहाँ तेणुक आज आम पॉलिटी पढ़ा. ओके इंडियन पॉलिटी आम स्टार्ट कर दिले. आम फंडामेंटल राइट आई गेस फंडामेंटल राइट आम कौन को आर्टिकल्स स्टार्ट कर देते सारी देते प्लीज कमेंट करूँ. फंडामेंटल राइट्स आम स्टार्ट कर देते मोर जी मन अच्छी. राधे राधे जय. गुड आफ्टरनून एवरीवन. ऑल क्लियर. ओके चलो मत टिके प्लीज रिमाइंड कर दिंतु को आर्टिकल्स आम कंप्लीट कर देते. आई थिंक आर्टिकल 12 आम कर देते आर्टिकल 13 आम कर देते. ओके एम आई राइट. अच्छा तो बेसिक्स आम लास्ट टाइम बुझाई थी. पार्ट 3 अच्छी यहाँ आर्टिकल 12 to 35 बोरोड इट फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन राइट. फंडामेंटल राइट व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल से भी मुझे एक्सप्लेन कर देती. तापर आम बेसिक किसी माने कौन कौन आमर 7 फंडामेंटल राइट्स अच्छे. कोड 7 मतलब 1978 रे गोटे डिलीट होगा राइट टू प्रॉपर्टी सेटा आम देखी राइट. से आम जेहेतु कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट नाउ. तो राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट कौन, फंडामेंटल राइट कौन, नेचुरल राइट कौन, ह्यूमन राइट्स कौन, ता भितर डिफरेंस आम देखी. अच्छा ओके सो बर्तमान आम आर्टिकल 12 सारिदे. आर्टिकल 13 सारिदे राइट. आम आर्टिकल
14 रू स्टार्ट करियो ओके ठीक अच्छे तो आर्टिकल 14 रू आम स्टार्ट करिया वर्तमान आर्टिकल 14 कौन कहूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मु बहुत किसी आपको एक्सप्लेन करिविनी जेति कि कॉन्सेप्चुअल जिनस अच्छे मुझे एक्सप्लेन करदेवी बुझेदेवी जहाँ आम डिस्कशन करिया बाकी बाकी जिनस गुड़ा आप निजे से चाहिए बुक रे पढ़ी बुझीपारे ओके तो मेजोरिटी पिलांकर जहाँ डाउट रहा से गुड़ा ही क्लीयर करिया जेमती इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भितर कौन डिफरेंस अच्छी ओके तो लेट अस स्टार्ट आर्टिकल 14 ओके डन समस्ते रेडी तो ये आमर एक्चुअल रे जोटा फंडामेंटल राइट स्टार्ट होची आर्टिकल 14 ओके इक्वालिटी बिफोर लॉ राइट तो फर्स्ट देखंतु आर्टिकल 14 कौन कहूँ दैट स्टेट shall not deny any person equality before law or equal protection of law within the territory of India right तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहला दैट स्टेट माने पॉलिटिकल साइंस आम जो स्टेट कॉन्सेप्ट को पढ़ुचे बाय इंडियन पॉलिटी रे इट मीन्स द कंट्री इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ओके तो कंट्री बा जो माने गवर्नमेंट चाहिए कौन कौन सी सिटीजन रो इक्वालिटी बिफोर लॉ किंबा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को वायलेट करि परिबो नाही विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया अच्छा तो ये कॉन्टेक्स्ट में आपण मन को गोटे क्वेश्चन पचारिबे आपण मन मते कहंतु ये जो लास्ट गोटे टर्म कहली टेरिटरी ऑफ इंडिया तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और यूनियन ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लेट मी नो वेदर टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट or union of India is a broader concept okay anyone क्या कहि परिबे union of India is a broader concept how श्रेया विक्ट्री केमती केमती यूनियन ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट प्लीज एक्सप्लेन रेस्ट जो माने कहउचंती से माने एक्सप्लेन मध्ये करंतु माने गोटे सेंटेंस रे बिल जोडरी मध्ये कहउचंती यूनियन ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट Mithali, territory of India. How? Yes, Article 1 itself defines that India or Bharat shall be a union of the states. Yes, I know that. But I am asking union of India or union of the state is a broader concept or territory of India is a broader concept. ये concept को मु बोधे आप जला Article 1 पढ़े थिले मैं अपन मन को explain करे थिले मोर जति मन पढ़ुछु. Yes. देखो तो territory of इंडिया इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन यूनियन ऑफ इंडिया एटा मन रखु सब कौन पाई ना टेरिटरी ऑफ इंडिया रे कौन आसे देखो जिते बेले यूनियन ऑफ इंडिया कथा आम कहूचे यूनियन ऑफ इंडिया रे केवल स्टेट्स माने आस्तांती ओके जेमती आम भारत रो जोड़ा परिधि अच्छी ओके ऑल द स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया ओके 28टा स्टेट जा अच्छे बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेरिटरी ऑफ इंडिया रे नॉट ओनली द स्टेट्स तो आसुची ता संगे यूनियन टेरिटरी मध्ये आस्तांती यूनियन टेरिटरी ओके ता संगे एनी एक्वायर्ड टेरिटरी काली कि इंडिया जदी को टेरिटरी को एक्वायर कला कोनोसी मीन्स मिलिटरी एक्शन हो किबा एग्रीमेंट हो राइट कोनोसी मीन्स मध्ये इंडिया जदी गोटे टेरिटरी को एक्वायर करूची बा गोटे
नुआ एरिया को एक्वायर करछि सेटा टेरिटरी ऑफ इंडिया भितर आसीबो जते बेले कि यूनियन ऑफ इंडिया केवल स्टेट्स मानन को ही दर्शाउछि ओके यस मिताली वेरी गुड करेक्ट राइट नेक्स्ट ओके तो लेट मी नो आर्टिकल 14 जोटा अछि एडा केवल सिटीजन मानक पई ना सिटीजन मानक आउ फॉरेनर मानक पई मते बा एलियन मानक पई अच्छा मते मते को माने कहि परिबे व्हिच फंडामेंटल राइट्स आर ओनली रिजर्व्ड फॉर इंडियन सिटीजन्स प्लीज एक्सप्लेन मी व्हिच फंडामेंटल राइट्स आर ओनली रिजर्व्ड फॉर इंडियन सिटीजन्स फास्ट बी फास्ट It's okay, Victory, no problem. फिफ्टीन 16 19 29 30 तो से हिसाब से आर्टिकल 14 जोटा आम बर्तमान पढ़ुचे सेटा इंडियन सिटीजन मान एज वेल एज फॉर द एलियंस और द फॉर द फॉरेन सिटीजन्स ऑल्सो ओके नाउ तो बर्तमान देखिबा इक्वालिटी बिफोर लॉ एवं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जोटा आर्टिकल 14 रे मेंशन है से दुटा भीतर मेजर डिफरेंस कौन ओके गुड प्रियंका 15 16 19 29 30 गुड so these five fundamental rights are only reserved for Indian citizens right तो गोटे काम करो इफ यू हैव नोट्स दुटा कॉलम क्रिएट कर दियंतु आपण दुटा गोटे साइड रे इक्वालिटी बिफोर लॉ लेफ्ट साइड रे एवं राइट साइड रे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को रखंतु ओके ओके गोटे साइड रे इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गोटे साइड रे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ओके ईबीएल एंड ईपीएल तो प्रथम देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ जोटा अच्छे इट कम्स फ्रॉम the British origin okay it is a British origin concept and we have borrowed it this equality before law is borrowed from the British constitution right which is an unwritten constitution mention this on the other hand equal protection of law is borrowed from American constitution okay equal protection of law is borrowed from American constitution okay तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ताको यदि आमे सिंपली एटाइमोलॉजिकली बा तार जो शब्दर व्युत्पत्ति अछि सेटा को यदि आमे देखिबा तार सिंपल मीनिंग कोन होची कोनोसी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स किबा कोनोसी इंडिविजुअल सिटीजन पई कोनोसी प्रकार स्पेशल प्रिविलेज दिया जीवो नाही राइट तो इक्वालिटी बिफोर लॉ रे आपण लिखि परिबे दैट नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनी इन फेवर ऑफ एनी पर्सन और एनी ग्रुप ऑफ पर्सन राइट समस्ते आईन आगरे समस्ते समान जेमति एटा को ट्रांसलेट कोन हबो इक्वालिटी बिफोर लॉ लॉ आगरे समस्ते समान राइट द्वितीय जिंस इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड जो लॉ बा जो कानून तैयारी से तुमर से आपनकर बीएनएस हो बीएनएसएस हो एविडेंस एक्ट हो जहाँ किसी भी नियम अच्छी ता सामने रे समस्त समान में ही भी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ही भी द प्राइम मिनिस्टर द मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट जज दो केतेटा एक्सेप्शन अच्छी आर्टिकल 14 रो
किंतु मोर और लेस जदि देखिबा जेमति प्रेसिडेंट आउ वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट एवं गवर्नर को केस रे तांकु किछटा कोन हाई हैंडेडनेस तांकु मिलिची बा तांकु किछटा इम्यूनिटी मिलिची राइट किंतु नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रे जदि हमें देखिबा प्रत्येक सिटीजन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड राइट ता आगे समस्त को इक्वल ट्रीटमेंट करा हबो यस ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ राइट थर्ड नो पर्सन इज अबव द लॉ कौनसी व्यक्ति लॉ रो ऊपर आसबे नहीं से धनी होंतु गरीब होंतु ऑफिशियल होंतु नॉन ऑफिशियल होंतु रिच होंतु पोर होंतु ओल्ड होंतु यंग होंतु समस्ते लॉ रो अंडर रे ही आसबे इक्वली ओके कहीं नो वन इज अबव द लॉ एमती नहीं कि जो मैंने बिलियनर्स होचंदी से माने लॉ रो ऊपर आसबे नो एवरी पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड जेंडर फाइनेंशियल स्टेटस देयर प्लेस ऑफ बर्थ ओके देयर सोशल स्टेटस विल कम अंडर द लॉ इज द सुप्रीम लॉ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ओके एटा मन रखो एटा हला इक्वालिटी बिफोर लॉ तो आम जब ये देखा इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन करुचे यहाँ बेसिकली रेस्ट्रिक्ट करुचे ओके कौन करुचे यहाँ रेस्ट्रिक्ट नो वन इज अबव द लॉ तो जो नो किंबा रेस्ट्रिक्शन जो आसला आमे 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 एटा को कहि परिबा दिस इज अ नेगेटिव कोनोटेशन कोन दिस इज अ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ negative connotation okay because it is restricting or it is inhibiting individuals to be above the law कोनोसी व्यक्ति को कोनोसी नागरिक को आईन बा कानून ऊपर हबा को किंबा ताकू डोमिनेट करिया को एटा रेस्ट्रिक्ट करूची सेति पे एटा को हमें नेगेटिव कोनोटेशन बोली विचार करूचे ओके द्वितीय जिनस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मु कहली जेमती इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आमे कोडू बोरो करचे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आमे बोरो करचे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रू राइट इक्वल प्रोटेक्शन लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें बोरो करचे व्हिच इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन राइट एतरे कोन होए एतरे इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस एटा मन रखंतु प्लीज नोट दिस डाउन व्हाट इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस मु यारो एग्जांपल देके आपन को बुझेबी इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस ओके सॉरी मो हैंडराइटिंग टिके इधर प्रॉब्लम होची प्लीज माइंड करियो सेटा को मु जहा कहूचे सेटा को भलसे सुनंतो अपन ओके इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस ओके द्वितीय जिनस similar application of the same laws to all person who are similarly situated okay the like should be treated alike okay आमे एटी कोन करचे जेमती इक्वालिटी बिफोर लॉ रे आमे कोन करले जो पूरा सिटीजन ग्रुप रहला एंटायर देशर लोक मन को आमे गोटे कैटेगरी रे ट्रीट करले किंतु इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रे आमे कोन करले आमे विचार करले कि समस्त सिटीजन जो मैंने अच्छा समस्त इक्वल नुहति समस्त कंडीशंस एवं समस्त स्टेटस समस्त एक्सेस अलग अलग तेणुक समस्त को आम गोटे कौन रूफ अंडर आने ठीक हेनी तेणुक आम कौन द इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस एवं द्वितीय आम कौन कहले सिमिलर एप्लिकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन अंडर हु आर सिमिलरली सिचुएटेड तो ये कौन ये आम डिफरेंशिएटेड लॉ बा डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस कहले अलग सर्कमस्टेंसेस रे
ये कौन डिफरेंशियल ट्रीटमेंट विषय में इनडायरेक्टली कह जाउची ओके सिमिलर एप्लिकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड बा सेटा को हमें डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कह जाय परिबा तृतीय तृतीय रे कहूची द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक द लाइक शुड बी treated alike ओके ठीक अच्छे एति बुझा पड़ा देखो आपको किसी जिन मन रखा पड़ो ओके सो ये जो टर्म्स गुड़ा अच्छी जो जिन गुड़ा आपको ये कहली द लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक राइट देन सिमिलर एप्लिकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड तो ये सब जिन आपको मन रखा पड़ो क्लियर राइट तो देखो यहाँ को एक्सप्लेन करा गोटे जिन कहूँ गोटे एग्जांपल देखो तो प्रथम जिन जोटा कहूँ सेटा इक्वालिटी विषय कहूँ एवं द्वितीय जोटा आम देखिले इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सेटा इक्विटी विषय कहूँ राइट तो ये जो दीटा कनोटेशन आम देखिले बा दीटा जो कॉन्सेप्ट देखिले दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी इक्वालिटी जोटा ब्रिटिश रे फॉलो हुए एवं इक्विटी कॉन्सेप्ट जोटा अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन रे फॉलो होता है ओके डन तो इक्वालिटी एवं इक्विटी भितर कौन डिफरेंस let me give you a simple example take for example for instance this is a wall गोटे कांथ अच्छी ओके एक ये जो बाउंड्री अच्छी ये बाउंड्री साइड रे फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच चलछि ओके ये क्रिकेट मैच चलछि राइट ये दीटा पर्सन अच्छे पर्सन ए एंड पर्सन बी ओके पर्सन ए रा हाइट सपोज 5 फीट एवं पर्सन बी रा हाइट सपोज 6 फीट ओके पर्सन ए रा हाइट है 5 फीट पर्सन बी रा हाइट है 6 फीट आउ ये जो वॉल अच्छी वॉल रा हाइट है 8 फीट ओके वॉल रा हाइट है 8 फीट तो तेणुक सपोज गवर्नमेंट लॉ कला कि समस्त को आम कौन करवा जो मैंने माने आम दी जन को चेयर बा स्टूल तांको देबा गोटे तांको स्टूल देबा तो सो दैट मैंने ये छिड़ा होगी मैच देखिपारे ओके तो इक्वालिटी अंडर आम कौन कले समस्त को आम इक्वाल देबा तो 5 फीट वाला जो अच्छे ताकू भी 3 फीट रो गोटे चेयर देले 6 फीट भी जो अच्छे ताकू भी 3 फीट रो आम गोटे चेयर देले तो 5 फीट को आम 3 फीट रो चेयर देले तार हाइट केते गला 8 फीट गला 6 फीट को आम 3 फीट रो चेयर देले तार हाइट केते गला 9 फीट गला तो देखो समस्त को इक्वली ट्रीट कराला बट ये गोटे क्वेश्चन होची कौन पर्सन ए जार हाइट 5 फीट से कौन सुविधा रे मैच देखि परिबो बिकॉज वॉल रो हाइट भी 8 फीट आउ तार हाइट भी 8 फीट गला तो ताकू मैच देखियारे सेडी असुविधा हबो बट से कंप्लेंट करि परिबोनी कि मो अगेंस्ट रे इनइक्वालिटी हिची ना दी जन को इक्वली ट्रीट करा जाय छे बट ये जिनसटा जदि एटा होची अमेरिका रे सॉरी एटा यूके रे बा ब्रिटेन रे एमती हो ये जिनसटा जदि यूएसए रे हला यूएसए रे सेम 8 फीट रो अछि पर्सन ए रो हाइट अछि 5 फीट पर्सन बी रो हाइट 6 फीट तो एटी देखा जिवो कि पर्सन बी को 3 फीट रो चेयर देले ही जिवो किंतु पर्सन ए को हमको बढ़ी की 4 फीट रो दबा को पड़िबो कोन पैना देखो ताको 4 फीट रो देले तार हाइट 9 फीट हे जिवो याको 3 फीट रो देले यार हाइट 9 फीट हे जिवो ए फर्स्ट लेवल रे देखंतु जण को 3 फीट रो चेयर दिया हला स्टूल दिया हला आउ जण को 4 फीट रो स्टूल दिया हला
तो जड़े ये कहीपर कि इनिशियल लेवल रे डिस्क्रिमिनेशन बा इनइक्वालिटी होची कौन पाइना जन को 3 दिया आउ जन को 4 दिया किंतु तार आउटकम कौन आउटकम हूँ 9 माने तार आउटकम टा इक्वालिटी है इक्वालिटी को हासिल करने अचीव करने आम जो मीन्स बा जो टूल्स यूज करुचे सेटा आम कौन कहे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आम से पढ़ले जो जो थे मुझे कौन कहली द लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक मन रखु द लाइक शुड बी ट्रीटेड जो माने समान कैटेगोरी समान हिसाब से बिहेव कर समस्त को क्लब करके आम वन रूप रे आनी कि इक्वली ट्रीट करवा नहीं जहाँ जार जो रिक्वायरमेंट अच्छे आम ताकू से हिसाब से दबा दैट इज कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आई होप आई एम क्लियर कौन श्रेया नो कौन बुझा पड़लानी आप ओके डन एवरीवन क्लियर गुड चलो वर्तमान आम देखिए सुप्रीम कोर्ट कर ये ऑब्जर्वेशन कौन अच्छे तो ओके गुड एवरीवन तो सुप्रीम कोर्ट कौन कहले सुप्रीम कोर्ट कहले दैट इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई ओके जेमती फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ओके very controversial topic which is prevalent since 1950 ओके ठीक अच्छे श्रेया जमती रिजर्वेशन हो गला रिजर्वेशन देखो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ कहे बट ये कौन इक्वालिटी दिया कि ना क्या बहुत बेसी प्रिविलेज दिया फॉर एग्जांपल ओबीसी हो गले एससी एसटी हो गले तांको किछटा प्रिविलेज दिया होची कौन पाई ना से केतरा सोशल एवं इकोनॉमिक पैरामीटर्स रे से बैकवर्ड अच्छा से आम कौन कर प्रिविलेज दौचे सो दैट सोसाइटी रो मेन स्ट्रीम रे से आसीपर काली के सपोज जदि आप जाकि सुप्रीम कोर्ट रे कंप्लेन करेंगे कि रिजर्वेशन जोटा अच्छी इक्वालिटी बिफोर लॉ रो कॉन्सेप्ट जोटा अच्छी से आर्टिकल 14 को वायोलेट करुचे तेणुक सुप्रीम कोर्ट पूर्व कहते दैट जो इक्वल्स एवं अनइक्वल्स को डिफरेंटली ट्रेड करा जाउची सेठी आर्टिकल 14 अप्लाई हबो नाही से पूर्व सुप्रीम कोर्ट एटा एज अ प्रिकॉशन कहि देचंती राइट तो से सुप्रीम कोर्ट आहुरी कहले कोन आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन राइट तार तो आपण अलगा यस फॉर एक्स सर्विसमैन पीवीटीजी आर categories under the broader ST category okay so से कहले बट आप क्लास लेजिस्लेशन करि परिबे नाही ता अर्थ कोनोसी गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी पई आमे गोटे आपण गोटे लॉ आनी परिबे नाही ओके आपण एटा करि परिबे कि सपोज पब्लिक जेमति आपनकर पब्लिक एग्जाम होछि से पब्लिक एग्जाम रे गोटे कैटेगरी को आपण किछरा स्पेशल प्रिविलेज दे परिबे सेहि पे आपण आइन आनी परिबे बट गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी पे जोटा आम क्लास लेजिस्लेशन कहे क्लास लेजिस्लेशन आपण करि परिबे नाही ता संगे सुप्रीम कोर्ट एटा मध्य कहले कि गवर्नमेंट चाहिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीजन ऑफ पर्सन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बाय लॉ करि परिबे बट जो भी क्लासिफिकेशन होची इट शुड बी रीजनेबल इट शुड बी लॉजिकल इट शुड बी व्हाट सफाइस्ड विथ रीजन ता पछरे सफिशिएंट रीजन बा लॉजिक थिबा कथा राइट एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन ए दिटा टर्म मन रखंतु जो काली के दीटा गोटे कम्युनिटी को सपोज कोनसी प्रिविलेज दिया होछ ता अर्थ सेकंड कम्युनिटी को इटी कम प्रिविलेज दिया होछ मु जेमति 5 फीट आउ जो आउ 6 फीट रो एग्जांपल देले तो सपोज ए को बेसी हाइट रो चेयर दिया गला तार तो बी को कोटे ना कोटे कम प्रिविलेज मिलुची राइट बट ए जो क्लासिफिकेशन अछि इट शुड बी व्हाट
intelligible differential. That means it should be based on intellect. सेटा इंटेलिजेंट वे रे बा इंटेलेक्चुअल वे रे करा जीवा कथा जोटा कि बुझा पड़तो कथा. अच्छा ई जे आमे फास्ट केस रे इट बुझले कि हां ना सेटा जस्टिफाइड जेतु कि ए रो हाइट कम ताकू आमे जदि बेसी हाइट रो चेयर न दो से जिंस को एंजॉय करि परिबो नाही. तो तेणु करी ताकू आमे बेसी हाइट रो चेयर देलु व्हिच इज डेफिनेटली रीजन और लॉजिक एंड इट इज आल्सो एन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल जोटा अछि जो डिफरेंशिएशन अच्छी सीटा बुझा पड़ी. फॉर एग्जांपल आपण घरे जमती आपण सिबलिंग्स अच्छे दी जन गोटे बड़ भाई अच्छी आ गोटे सान अच्छे भाई की भौणी अच्छी. तो घर को जहाँ भी खाଇବା आसला केक आसला कि जहाँ भी है आपण माँ कौन करती जे बड़ अच्छी ताकू बेसी दियंती ना जे छोट अच्छी ताकू बेसी दियंती. काहाको बेसी दिया हुए आपण घरे जहाँ जो मान सिबलिंग्स अच्छा से जानी कि काली की जदि माने कौन घरे केक आसला तो क्या को बेसी दि जाए. छोट बड़ को अधिका मिले. अच्छा मिताली विक्ट्री को छोट. अच्छा जेन गुड इवनिंग सोना. तो जनरली छोट पिला जो अच्छा जनरली बेसी शेयर मिलता है खाइबार कौन पे से छुआ छोट अच्छे ग्रोइंग स्टेज रे अच्छे राइट ताकू न्यूट्रिशन दरकार. तो तेणुक कौन करते ताकू बेसी माने जिसका बर्थडे होगा उसको ज़्यादा मिलेगा. पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन. ओके तो छोट छुआ सपोज वीक अच्छी तो ताकू आमे ताकू मदर कौन करेंगे ताकू बेसी देवे सो दैट से पिलार ग्रोथ हम. तो ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है गोटे हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है बट पॉजिटिव वे डिस्क्रिमिनेशन है. तो ये गोटे टर्म आसला कौन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन इटसेल्फ इज ए नेगेटिव वर्ड बट आमे कौन कले आमे डिस्क्रिमिनेशन को कहले पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. ओके तो आर्टिकल 14 ए विषय कह जोटा सुप्रीम कोर्ट आगु एज ए प्रिकॉशनरी स्टेप सेटा को क्लियर कर देछंती. श्रेया कौन कहते मत कम मिले आ मो सान भाई को अधिक हाँ सान भाई को अधिक दवा को पड़ो कौन पे ना से सान अच्छी से ग्रोइंग स्टेज रे अच्छे. ओके ताको न्यूट्रिशन दरकार. छोट पिला को नदेले कांदिबे हाँ कांदिबे यस मैंने कांदिबे मध्य आ ता संगे कौन बड़ भाई को कि बड़ भौणी जो अच्छे एज अ फादर कि मदर ट्रिटमेंट करा पड़े छोट छुआ मान निजर छोट भाई जो मैंने अच्छा बेसी देवा पड़े सब जिन राइट. जदि आप लॉस हो दैट यू शुड व्हाट यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ योर यंगर चाइल्ड. ओके दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन. इंडियन वैल्यू रो पार्ट एटा कि जो माने छोट अच्छे एज रे हो स्टेटस रे हो तांको आमे कौन करवा जिते पार पर्यंत आमे असिस्ट करवा तांको हेल्प करवा. ओके नेक्स्ट चलो नेक्स्ट. तो नेक्स्ट आम कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ. यहाँ बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ को नोट डाउन करूँ प्लीज. रूल ऑफ लॉ
ओके चलो तो रूल ऑफ लॉ जोटा अच्छी इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट which was propounded by a British jurist called A.V. Dicey. ओके तो A.V. Dicey कौन करते रूल ऑफ लॉ को propound करते he was a British jurist. Okay, British political theorist, right? And his concept of rule of law or the way he propounded this theory सेटा कौन कला परवर्ती समय जेतिक मध्य जेति कंट्रीज रे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हेची एवं डेमोक्रेटिक सेटअप रे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हेची सेटा को बहुत मात्रा रे थियोरेटिकल बैकिंग रूल ऑफ लॉ देची बिकॉज डेमोक्रेसी रे लॉ को सबुठ हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाय थाए तेणु करी ये जो रूल ऑफ लॉ थिला एटा कौन हेची देखिया यदि प्रत्येक कंट्री रो मॉडर्न टाइम्स रे मु कहूची जोठी भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हेची सेठी रूल ऑफ लॉ गोटे बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करछि ओके तो माने कौन कौन ब्रॉड फीचर्स रही रूल ऑफ लॉ रो वर्तमान आम देखिए तो प्रथम सब इंपोर्टेंट होछि रूल ऑफ लॉ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर नोट दिस डाउन ओके एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर राइट आर्बिट्रेरी रो अर्थ कोन आर्बिट्रेरी अर्थ होची समथिंग दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल समथिंग that is unlawful something that is anarchic or something that is authoritarian unreasonable ये सब जिनस आम कहि परिबा these are the broad word synonyms of arbitrary behavior ओके जेमती आपण फॉर एग्जांपल सद्दाम हुसैन जो टाइम इराक रे थिले से टाइम रे कोन होतला आर्बिट्रेरी गवर्नेंस होतला ओके दैट मीन्स मन इच्छा विदाउट एनी व्हाट फॉलोइंग्स ऑफ लॉ सेठी कोन होतला गोटे लोक को पनिश कर दिया जाई पारुथला किंतु इज इट पॉसिबल इन इंडिया और इज इट पॉसिबल इन एनी कंट्री who follows rule of law? No, you cannot arbitrarily exercise your power in a democratic setup, right? That is, no man can be punished except for a breach of law. जो जाए गोटे लोक कौन सी लॉ को वायलेट करी नहीं ब्रीच ऑफ लॉ करी नहीं से जाए से सिटीजन को आपण पनिश करि परिबे नहीं ओके अच्छा ना हु कैन टेल मी मुझे इराक रो एग्जांपल देले जो माने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ी थे देयर वाज आल्सो एन ऑटोक्रेटिक लीडर इन लिबिया वेरी फेमस व्हाट वाज हिज नेम के कहबो जे कहबो ताको गोटे टॉफी दिया हो ता गोटे टॉफी तो नो एटा च्युइंगम गोटे ओके हु कैन से द वेरी इनफेमस ऑटोक्रेट इन लिबिया फास्ट नॉर्थ कोरिया समस्त जान जो समस्त जान मुझे पचार टॉफी देले मु ऑनलाइन रे केमती कहबे केमती खाइबे ओ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मोहम्मद एल मेनफी ना कोड कॉपी पेस्ट करचंदी आपण भूल फैंसी ट्यूब कॉपी पेस्ट भूल से करचंदी आपण टॉफी देले मु ऑनलाइन डिलीवर कर देबी आपण
डोनाल्ड ट्रम्प को फाइनल करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प कौन लिबिया रो किए कोई पारिबनी लगुच गद्दाफी यस 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 करेक्ट पेगासस मेहेम 493 finally came with the right answer Muammar Gaddafi. Okay, Libya is in which continent by the way? Pegasus Mayhem, please answer. It is in Asia or in Africa or in Europe? Muammar Gaddafi, yes, Priyanka, good. Okay, it is in Africa by the way, right? तो प्रथम जिनस आम देखिले एविडेंस कौन कहले कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, राइट? आपण माने समस्त देखिथिबे गोटे वेरी वेरी पॉपुलर मूवी मु तार नाटा भूलुची से गोटे ऑटोक्रेट लीडर थी ताकू को भी जिनस पसंद आसलानी से कौन कर से डायरेक्टली मर्डर करने ऑर्डर देदेव से गोटे साइंटिस्ट को कह दैट आमर जो वार हेड अच्छी जो न्यूक्लियर जोटा वार हेड अच्छी तार वार हेडटा जनरली कौन पॉइंटेड रहे ओके से कौन डोम शेप्र तो से जाकि कह यहाँ डोम शेप्र रही भल लगुनि सो मेक दिस पॉइंटेड so that the enemy will be fearful of this and this will look more dangerous but से साइंटिस्ट जी से कहे सर साइंटिफिकली एटा पॉसिबल नहीं डोम शेप तो से सेटू कौन करेंगे जे चेला चामुंडा थे दैट पर्सन विल ऑर्डर दैट टू एलिमिनेट द साइंटिस्ट ओके एटा हला आर्बिट्रेरी पावर एक्सरसाइज करियार एग्जांपल आपण अनरिजनेबल ग्राउंड रे गोटे लोक को पनिशमेंट दउचंती जोटा कि रूल ऑफ लॉ अंडर रे आसे नहीं नाउ ब्रीच ऑफ लॉ रे कौन आसे अच्छा इग्नोरेंस ऑफ लॉ बा नॉट नोइंग द लॉ इज इट कमिंग अंडर ब्रीच ऑफ लॉ माने सपोज आपण लॉ जानी नाहंती एटा कोन होची लेखि होने वर्ष ignorance of law can it be termed under breach of law काली के आपण रास्ता को बाहर ले आपण हेलमेट पिंधि नाहंती गाड़ी चलाउछंती ट्रैफिक पुलिस आपण धरले आपण कहले सर मु नियमटा जानि नथिली कि आपण तीन जन को गाड़ी रे बसे परिबे नाही ओके हमर एमवीए एक्ट आसेला मोटर व्हीकल एक्ट आसेला तो आपण तीन जन को नै कि आपण साप वाले रास्ता रे जाउछंती गिरी गिरी राइट ट्रैफिक पुलिस आपण को छकरे धरी पकेले फाइन पकेले 1000 टका आपण कहले सर मु लॉ जानि नथिली मु सेति तीन जन को बसी आम हेलमेट पिंधु नेक्स्ट थर आम कौन करूँ आम मात्र 2 जन बसु आम 2 जन पिलियन राइडर हेलमेट पिंधिक आसब कौन हम से केस एटा को ब्रीच ऑफ लॉ ट्रैफिक पुलिस कौन आप कथा कहला पर कि मु लॉटा जान नी ट्रैफिक पुलिस कौन आपको इग्नोर कर दे पारे आपन को छाड़ दे पारे नो ओके सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑल्सो ब्रीच ऑफ लॉ आप कोर्ट रे कि अन्य कौन से जाकि कहीपर कि मत लॉ जना नाला तेणुक मु वायोलेशन कली ओके डन नेक्स्ट तो सेकंड पिलर ऑफ रूल ऑफ लॉ इज व्हाट इक्वालिटी बिफोर लॉ आम जोटा पढ़ले बर्तमान ओके तो प्रथम कौन देखिले नो और एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर द्वितीय कॉन्सेप्ट होची इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट इज कौन प्रत्येक सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज देयर ऑफिशियल पोजीशन दे आर अंडर द और दे कम अंडर द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ द लॉ और व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द लोकल ऑर्डिनरी कोर्ट्स or which are what governed by the code of law तो लॉ अंडर रे समस्त समान जोटा आम ऑलरेडी ऊपर आर्टिकल 40 डिस्कस कर सारी तृतीय जिनस हूँ
यार थर्ड पिलर कौन रूल ऑफ लॉ रो थर्ड पिलर होची प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स कौन प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ओके प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ता अर्थ कौन एविडाइसी कहले कौन प्रथमे कॉन्स्टिट्यूशन आसिला ना प्रथमे इंडिविजुअल्स माने आसिले इटी एविडाइसी कहले दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स as defined and enforced by the courts of law rather than the constitution is the source of the individual rights okay ठीक अच्छे तो देखो आमर कॉन्स्टिट्यूशन केवे तैयारी हैला 1950 रे 1949 रे रेडी हेतला 1950 जनवरी 26 रे आम एटा को एनफोर्स करले राइट तो आपण माने कहंतु आमर फास्ट लोक माने आसिले बा पीपल आसिले ना फास्ट कॉन्स्टिट्यूशन आसिले प्रथमे लोक थिला परे सेना कॉन्स्टिट्यूशन आसीबो ओके तापर कौन है ये जदि एभिड डाइसिंगर थ्योरी हिसाब से जीवा से कौन कहते से कहते कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड एनफोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट से कहते प्रथमे कॉन्स्टिट्यूशन आसिला कॉन्स्टिट्यूशन केते राइट्स देला लोक मानकू तापर जाय लोक माने कौन कले राइट एंजॉय कले ओके तो इंडिया केस रे एटा एप्लिकेबल प्रथमे कॉन्स्टिट्यूशन आसिला तापर लोक माने राइट एंजॉय कले बट एविडेंसिंगर कथाटा अलगा से कहते लोक माने थिले लोक माने निजे निजे को कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू रे राइट देले जोटा कि इंडिया रे हे नथिला इंडिया रे आमे कॉलोनियल टाइम्स रे लोक मानकर फंडामेंटल राइट्स बोले सेमती किछि नथिला आमे कोन कले आमे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तयारी कले कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी कला परे जाई आमे सेतिरे सातरा फंडामेंटल राइट्स रखिले एवं से सातरा फंडामेंटल राइट्स कौन 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 कला लोक मानको फंडामेंटल राइट्स देला तो इंडियन केस रे प्रथमे कॉन्स्टिट्यूशन आसिला तापर फंडामेंटल राइट्स आसिला किंतु एविडेंसिंगर करो कहबा कथा उल्टा से कहउचंती राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल प्रथमे आसिला तापर जाई कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हिची okay constitution is the result of the rights of the individual according to evidency write this down evidency कौन कहले constitution is the result of rights okay ठीक अच्छे तो आम तीनटा डेफिनेशन देखिले कौन कौन तीनटा पिलर्स देखिले रूल ऑफ लॉ तो प्रथम पिलर है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर द्वितीय जिनस देखिले इक्वालिटी बिफोर लॉ एवं तृतीय जिनस देखिले दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल ओके ता अर्थ फास्ट लोक मन राइट थिला तापरे कॉन्स्टिट्यूशन आसीची तो प्रथम दुईटा जिनस जो पिलर देखिले एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर एवं द्वितीय जिनस हला इक्वालिटी बिफोर लॉ एटा आमे इंडिया रे देखा को मिले right the first and the second elements are applicable to the Indian system but the third one which says that what that constitution is the result of the rights of the people that is not applicable in Indian system why because in India constitution is the source of the rights of the individuals प्रथमे constitution आसिला तापर जे लोक माने राइट्स पाइले तेणुक तृतीय पिलाटा इंडियन केस रे एप्लिकेबल हम ना एविडेंस तार उल्टा जिनसटा ये कही ओके डन समस्त बुझा पड़ा जिनस क्या को बुझा पड़ानी
source people of India. Yes. आमर ये कॉन्स्टिट्यूशन हो लोक मान राइट्स सोर्स लोक मैंने सोर्स नुहति कॉन्स्टिट्यूशन हो सोर्स ओके एवरीवन गॉट इट क्लियर प्रियंका विक्ट्री समस्त क्लियर ओके कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट तो यार किसी मुझे आपको मझे कही दैट दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ और जोड़ा जोड़ा इक्वालिटी कॉन्सेप्ट पढ़े दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट रादर दिस इज अ जस्टिफाइड कॉन्सेप्ट ओके तार अर्थ यहाँ 100% इंडिया लागू होना यार किटा एक्सेप्शंस ता सांगे ये जो रूल ऑफ लॉ जो आम जिनसा पढ़ले एविडेंस जोटा देते सुप्रीम कोर्ट कौन कहले केशवानंद भारती केस रे द रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपन मैंने समस्त बेसिक स्ट्रक्चर कौन पूर्वर शुणी थी ओके सुप्रीम कोर्ट कौन कहले दैट रूल ऑफ लॉ इज पार्ट ऑफ basic structure of the constitution एटा मन रखु सुप्रीम कोर्ट कहले रूल ऑफ लॉ बेसिक दार्थ काली की जदि लोकसभा किंबा राज्यसभा पार्लियामेंट जदि चाहिला आम रूल ऑफ लॉ रो कॉन्सेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशन रो आम हटे देबा कैन दे डू इट no they can the parliament using its constituent power cannot make amendments or cannot remove the rule of law from the Indian constitution. The answer is simple and clear. The answer is because the Supreme Court has included rule of law as part of the basic structure of the constitution, and the parliament, though it has popular sovereignty, it cannot touch any component of the basic structure constitution. Okay, good. Next देखिबा कौन कौन exceptions अछि यार what are the exceptions of इक्वालिटी कहा का ऊपर एटा भारत रे लागू होबो नाही बा कहा का को कौन होबो स्पेशल प्रिविलेज बा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया होबो प्रथम हैला आर्टिकल 361 यार सबुठु बड़ एक्सेप्शन मन रखु आर्टिकल 361 कौन कहूचे प्रेसिडेंट और द गवर्नर is not answerable to any court of law okay for the exercise and performance of the powers and duties of his or her in the office right ता अर्थ जदि प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफिस निज ऑफिशियल कैपेसिटी रे कोनोसी डिसीजन नौचंती काली की से माने कोर्ट जदि डाकर आसिले एवं कोर्ट तांको पचारि परिबोनी कि आपण ए डिसीजनटा कोन पय नेले ओके दैट मीन्स दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ द लॉ तो एटी तांको कोन तांको स्पेशल प्रिविलेज दिया द्वितीय जिनस प्रेसिडेंट बा गवर्नर को अगेंस्ट रे से जो ऑफिस रे अछंती बा तांकर टर्म ऑफिस जदि कंटिन्यू होची तांको अगेंस्ट रे कोनोसी प्रकार क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंट्रोड्यूस करा जाई पारिबो नाही नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स against the president or the governor during his term of office से 5 वर्ष पर जदि प्रेसिडेंट तांको पोस्ट वैकेट हो गला तापर जाई आपण तांको अगेंस्ट रे क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करि परिबे ओके थर्ड प्रेसिडेंट किंबा गवर्नर को अगेंस्ट रे आपण अरेस्ट बा तांको इम्प्रिजन करि परिबे नाही ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस
तांको आपण जेल रे पुरे परिबे नाही राइट। फोर्थ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो स्टार्ट करा जाय परिबो नाही बट सिविल प्रोसीडिंग्स मध्ये तांको अगेंस्ट रे स्टार्ट करा जाय परिबो नाही दैट इज नो सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ओके। जदि सिविल प्रोसीडिंग आपण स्टार्ट करिया को चाहउचंती तांको मिनिमम प्रेसिडेंट आउ गवर्नर को 2 मंथ्स रो प्रायर नोटिस देवा को पड़िबो एटा मन रखंतु 2 मंथ्स ऑफ प्रायर नोटिस एटा दिस इज ओनली इन केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो भूल नहीं जानतु क्रिमिनल प्रोसीडिंग हे पारिबोनी ओके क्रिमिनल प्रोसीडिंग हे पारिबो बट 2 मंथ्स रो प्रायर नोटिस देवा को पड़िबो ठीक अछि ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 361 सरला वर्तमान आउ गोटे आर्टिकल अच्छे आर्टिकल 105 आर्टिकल 105 प्रिलिम्स रे आई थिंक यूपीएससी एटा पचार थिला मते आर्टिकल 105 कौन कहूँ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ओके कौन कहूँ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एतरे कौन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अच्छे तांकू कितना स्पेशल प्रिविलेजेस दिया होता है ओके। कौन कहूँ नो ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट और एनी कमिटी ओके। जदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा कि राज्यसभा भीतर किसी कहते कौन हिसाब से भोट करुँच देन से ऊपर आपण तांको कोर्ट को डाकी परिबे नहीं बिकॉज ही हैज गॉट फुल ऑटोनॉमी इनसाइड द पार्लियामेंट ओके सेटा को हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बोली कहूचे ओके। सिमिलरली आर्टिकल 194 एमएलए मान को केस रे मध्य तांको प्रिविलेजेस दे थाए जेंती 105 काको दोची एमपीज मान को दोची 194 सेमती एमएलएस मान को मध्य मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज मान को मध्य प्रिविलेजेस दिया दे थाए सेम ओके। नेक्स्ट जो ना फॉरेन सोवरेन्स अछंती ओके फॉर एग्जांपल अन्य को कंट्री प्रेसिडेंट आसिले अन्य को कंट्री रो एम्बेसडर्स आसिले अन्य को कंट्री रो डिप्लोमेट्स आसिले तो तांको क्रिमिनल एवं सिविल ये रे इम्यूनिटी दिया जाए थे क्रिमिनल एवं सिविल प्रोसीडिंग रे तांको इम्यूनिटी दिया जाए थे ओके। तांको नॉर्मल लोगों को जेमती प्रोसीडिंग करा जाउची तांको अगेंस्ट से नॉर्मल ये रे प्रोसीडिंग स्टार्ट करा जाए परिबो नाही ता संगरे इंडिया रे जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस रो जहा ऑफिस अछि बा यार जहा एजेंसीज अछि यूएन रो जहा एजेंसीज अछि सेथरे जो मेंबर्स अछंती तांकू मध्य डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलता है ओके। तांकू कौन मिलता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ओके डन। अच्छा मते वर्तमान कहंतु यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज जोटा अछि यूएन रो केतरा बॉडी अछि बा तार केतरा विंग अछि और सेटा कौन कौन या पर हमें क्लास को वाइंड अप करियो। व्हाट आर द विंग्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फास्ट के कहबो प्रिंसिपल ऑर्गन 6 कौन कौन व्यक्ति चार्टा अरे कह मु 6टा 4टा 5टा 12टा 14टा मुझे कौन कह कौन कौन अच्छी
The General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, the Secretariat and International Court of Justice. ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲୁଛନ୍ତି, Assembly, Security, yes, Priyanka Prasad, General Assembly, Security Council, Economic and ECOSOC, Trusteeship Council, आपण माने ऊपर भूली जाइतिले बोधे Trusteeship Council, yes, ICJ and the Secretariat, very good. So there are 6 wings or 6 organs of the United Nations organization. Okay. तो काली की आपनकर नेक्स्ट क्लास पाई आपण कोन करिवे ए जति एक्सेप्शंस रहिला से एक्सेप्शन भितर आउट एक्सेप्शन अछि जोटा हला आउट कानून अछि AFSPA AFSPA. ओके, तो AFSPA विषय रे आपण समस्ते पढ़ी के नोट डाउन करके आस्थिबे व्हाट इज AFSPA एंड तार कोन कोन प्रोविजंस अछि. ओके, बुझा पड़ला. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट विषय रे आपण माने काली पढ़ी के आस्थिबे. डन एवरीवन, एनी डाउट्स? Yes, good. Build your dream. No doubts, everyone. So everything clear for today. So from tomorrow onwards, we'll start Article 15. So thank you, everyone. Thank you. Okay, so I'm winding up the class. I hope there are no doubts. Please revise whatever we have discussed today. I'll be letting you know about the next class. Okay. So thank you for your time. Have a good day. Bye.